Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. I, Faiza Tariq, on behalf of University of Education, welcome you all in the lecture number 13 of Computer Communication and Networks. Dear students, what we were studying. In our previous lecture, lecture number 12, we have started the conversions. Students, as you know that data can be analog or it can be a digital, whereas a signal can also be a digital or it can be an analog. Sometimes it is our need to convert the data into the signal, and sometimes we need to convert the digital data into the digital signal, and sometimes we need to convert the digital data into the analog signal. Sometimes we have an analog data and it is our need to transmit that data over digital signal, and sometimes we have an analog data and we have to convert that analog data over the analog signal as well. So for that purpose, in the previous lecture, what we have learned how we can transmit our digital data over a digital signal. Our today's lecture is about the analog to digital conversion. How can we perform this analog to digital conversion in this way? We will see that what is an pulse amplitude modulation, what is a pulse code modulation, what is a quantization, and what is a binary encoding, and after that how can we do again digital to digital conversion. Students, we sometimes need to digitize an analog signal to send human voice over a long distance, we need to digitize it first. Since digital signals are less prone to noise and a computer can understand the language which is also in the form of digital. So this is called analog to digital conversion and also called digitizing an analog signal. This type of conversion requires a reduction of potentially infinite number of values in the analog signal so that it can be converted to digital bit stream with minimum loss of information. Here we have an analog data and we want to convert that analog data over a digital signal. So how can we perform it? Here for this purpose we have an analog to digital converter. Analog to digital encoding is also called a codec. That what will do this codec? It will take the analog data and it converts that analog data to the digital signal, and this is happening at the end of sender. What will happen at the end of receiver? Again, receiver receives a signal which is in the form of digital and it has decoder. ठीक है, और डिकोडर क्या करेगा? वो कन्वर्ट करेगा डिजिटल सिग्नल को एनालॉग डाटा के अंदर. Students, now the first step over here to convert an analog data into the digital signal is a pulse amplitude modulation. What is a amplitude modulation? It takes the analog signal, then it will sample that analog signal and generates a series of pulses based on the result of sampling. The PAM signal is still analog since its amplitude can vary over the amplitude range. Then the PCM modify the pulses created by PAM to create a complete digital signal. PAM is converted into an all digital form by quantizing each pulses into its equivalent binary form, and 8 bits are used to quantize each PAM signal, which includes 1 bit as a sign bit, and this is an example of quantization. So how all this happened, how we can perform all, we will see turn by turn. Students, this is an analog signal and this is a PAM signal. What is happening over here? यहाँ पे analog signal और जो है वो PAM signal के अंदर क्या difference है? How can we see this? Students, यहाँ पे हमारा जो data है that is analog. अब हमने क्या करना है कि हमने इस analog data को sample करना है at the regular intervals. ठीक है, अब यहाँ पे जब आप रेगुलर इंटरवल्स पे डाटा को जो है वो सैंपल करते हैं, उसके बाद हम यहाँ से इसको
रिमूव कर देते हैं इस लाइंस को, तो हम वी कैन शो दिस सिग्नल एज अ पैम सिग्नल। ये देखें यही वाला सिग्नल जो है अब यहाँ पे आपको जो शो कराया गया है दैट इज सेम सिग्नल है, लेकिन हमने इसको जो है वो पैम सिग्नल के अकॉर्डिंगली कर लिया। सो अभी भी बट स्टिल दिस डाटा is again is an analog data. Pulse amplitude modulation has some applications, but it is not used by itself in data communication. However, it is the first step in another very popular conversion method that is called a pulse code modulation. And the pulse code modulation will create a data which is in the form of digital. स्टूडेंट्स वही जो पीछे अभी हमने पैम सिग्नल से जो है वो डाटा को और एनालॉग सिग्नल में रेगुलर इंटरवल्स पे सैंपल करके जो हमने पैम सिग्नल क्रिएट किया था उसको हमने किसके अकॉर्डिंगली किया था, दैट इज अकॉर्डिंग टू द एम्पलीट्यूड। ये दिस इज एन एम्पलीट्यूड, ठीक है। अब एम्पलीट्यूड की वैल्यूज हमने मेजर करनी है, जो यहाँ पे हमने वैल्यूज दी हैं along the time axis। आपके पास जो है इस वाली साइड पे जो है दे हैव ऑल द पॉजिटिव वैल्यूज और यहाँ पे आपके पास नेगेटिव वैल्यूज होती हैं एज यू ऑल नो। और ये हमारे पास एक स्केल गिवन है और इस स्केल के अकॉर्डिंगली हम हर सिग्नल को उसके एम्पलीट्यूड उसका पीक एम्पलीट्यूड के अकॉर्डिंगली हम जो है वो लिख लेंगे कि क्या वैल्यूज आ रही है। दिस इज द पॉजिटिव 25, ये थोड़ा सा इससे कम है तो 24 हो गया, यहाँ पे 38 हो गया, 48 दिस इज नियर टू 50, देन 39, 26 माइनस 15 माइनस 18 माइनस 50 प्लस 52 plus 127 plus 127 plus 110 plus 90 plus 88 plus 77 हमने एम्पलीट्यूड के अलोंग इसके स्केल के अकॉर्डिंगली जहां पे जो जो वैल्यूज बनती थी वो पुट कर दी है। This is actually called the pulse amplitude modulation and quantization. Quantization क्या है? What is a quantization? Students, नाउ जब हमने इनको अलग किया देन वी कैन से कि ये अगर हम इसको इस तरह से देखते हैं तो हम कह सकते हैं कि दिस सिग्नल ये सिग्नल जो है हमारा डिजिटल सिग्नल भी कहला सकता है। लेकिन ये किस तरह से हम कहेंगे कि ये डिजिटल सिग्नल है? स्टूडेंट्स हम हमारे पास यहाँ पे 24 है, हमने इस 24 डेसिमल नंबर है, हम इसको डिवाइड करेंगे 2 के साथ और इसका इक्विवेलेंट बाइनरी निकाल लेंगे। 2 1s are 2, 2 2s are 4 और आपके पास 0 आया, resultant in 0, then 2 6 are 12, result 0, 2 3s are 6, result is 0, and 2 1s are 2 and 1, we have 1 1 0 0 0। इसकी पैडिंग कर देंगे, टोटल हमें जो है वो कितनी बिट्स रिक्वायर्ड है 1 2 3 4 5 6 7 और जो लास्ट वाली 8 बिट है वो अगर पॉजिटिव है तो हम उसको 0 पुट करेंगे और अगर नंबर नेगेटिव है तो हम उसको 1 पुट करेंगे। बट 24 इज पॉजिटिव तो उसका जो इक्विवेलेंट बाइनरी आएगा वो 000 11 000 आएगा। You can see over here this is 000 11 000। इसी तरह से हमने सारे नंबर्स की इक्विवेलेंट जो है वो बाइनरी ले लेने हैं so that we can convert that into the digital signal। So you can see that all the numbers that we have shown, जितने भी हमने नंबर आइडेंटिफाई किए थे उन सब नंबरों के यहाँ पर हमने इक्विवेलेंट जो है वो बाइनरी नंबर्स दे लिए हैं। और इफ ये जो पिंक वाला 0 और पिंक वाला 1 है ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि अगर पॉजिटिव वैल्यू है तो इज द साइन बिट इज 0 एंड इफ द नेगेटिव वैल्यू देन द साइन बिट इज 1। सो दिस इज कॉल्ड द साइन बिट। After that, now it will be very easy for us to convert that decimal data जो हमारे पास analog data था, हमने उसकी pulse amplitude modulation की, उस pulse amplitude modulation में हमने quantization किया और हमने उसका equivalent जो था वो binary identify किया। Now it will be very easy for us to create a digital signal, right? What is happening over here? सबसे पहले हमारे पास क्या हुआ? From analog signal to PCM digital code हमने क्या किया? ठीक है, the first step is the number 1. Let's start from here. यहाँ से start हो रहा है। We have an analog data. उस एनालॉग डाटा को हमने पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन से पास किया तो हमारे पास उस डाटा के सैंपल्स आ गए। आफ्टर दैट द सैंपल एनालॉग डाटा हमने उसको क्वांटाइजेशन की है। आफ्टर पासिंग फ्रॉम द क्वांटाइजेशन वी हैव गॉट द वैल्यूज ऑफ द along with the amplitude।
Then हमने उसको पास किया through the binary encoding, and after binary encoding we got the binary data. Students, now we have binary data, and we have to convert this binary data into the we have convert this digital data into the digital signal. So how can we perform that? We have a method by which we can convert the digital data into the digital signal, and that is called the line coding. Then we will pass the data from the line coding and we will get the digital signal. Students, how fast do you have to sample an input source to get a fairly accurate representation? For this purpose, Nyquist says that 2 times the bandwidth we can take a samples. Thus, if you want to digitize voice of 4000 Hertz, then what you need? You need to sample at 8000 samples per second. How we got this 8000? We have a 4000 of over here. So if we want to digitize the voice of 4000, so what you need to sample at twice of the, we have bandwidth that is 4000, twice of bandwidth will be an 8000. According to the Nyquist theorem, the sampling rate must be at least 2 times the highest frequency, and the sampling rate must be at least 2 times the highest frequency. What is the range of telephone system? What is the highest frequency range? And what is the sampling rate? आपको पता है कि telephone frequency range क्या? So telephone frequency range is 3000 hertz to 3400 hertz, right? So what is the highest frequency of the range? That is 3400. And what is the sampling rate? 3400 multiplied by 2, that is equals to 6800 samples per second. That is the sampling rate. Highest frequency of signal is 2100 and the lowest frequency is 2000. Calculate the bandwidth and the sample rate. Bandwidth is the highest frequency minus lowest frequency. Highest frequency is the 2100 and lowest frequency is the 200 hertz. But is a bandwidth that is 1900 hertz, and what is the highest frequency? It is 2100 hertz. 2 multiplied by frequency highest, that is 2 into 2100 hertz, which is the 4200 hertz is the sample rate. What sampling rate is needed for a signal with a bandwidth of 10,000 hertz? यहाँ पे हमें bandwidth given है और साथ में हमें spectrum भी दिया गया है, that is 11,000 minus 1000. जब हम करेंगे तो we will get the bandwidth that is 100,000. The sampling rate must be twice of the highest frequency, and our highest frequency is the 11,000. When we will perform 2 multiplied by 11,000, then what is happening over here? That is the 22,000 samples per second. Students, a signal is sampled. Each sample requires at least 12 levels. हमें हर sample को 12 levels required है. And the level of precision क्या है? 0 plus positive 0 to positive 5 and negative 0 to negative 5. So how many bits should be sent for each sample? हमें कितनी bits भेजनी है? अभी देखिए यहाँ पे -0, -1, -2, -3, -4 एंड -5. ये कितने हैं? 1 2 3 4 5 6. 6 लेवल्स हमें चाहिए, रिक्वायर्ड होंगे -0 से -5 तक, और 6 लेवल ही हमें रिक्वायर्ड होंगे positive 0 to positive 5 तक. सो हमें कितने लेवल्स रिक्वायर्ड है? ईच सैंपल रिक्वायर्स एटलीस्ट 12 लेवल्स ऑफ प्रिसीजन. सो हाउ मेनी बिट्स शुड बी सेंट फॉर ईच लेवल? हमें हर जो है कितनी बिट्स भेजनी होंगी हमें हर सैंपल के लिए? स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास अगर हम कहते हैं कि 2 की पावर 2 है, दैट इज इक्वल्स टू 4. अब हम कहते हैं कि 2 की पावर 3 है तो दैट इज इक्वल्स टू 8. बट अगर हम कहते हैं कि 2 की पावर 4 है दैट इज इक्वल्स टू 16. हमें
12 चाहिए, ये ना तो 2 raised to power 2 में फिल हो रहा है, ना ये 2 raised to power 3 में फिल हो रहा है, क्योंकि we required 12 samples. But there is no number between the 2 raised to power 3 and 2 raised to power 4. There is no concept of 3.5. So what we will take a 2 raised to power 4, which is equals to 16. So we need 4 bits over here. 1 bit for the sign and the 3 bits for the value. 3-bit value actually can represent 2 raised to power 3, that is 8 levels. 8 levels are 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, and up to triple 1. And we require actually 12 samples, so it will not fulfill our demand. So which is more than that we need actually. So a 2-bit value is not enough again. So 4-bit value is too much because 2 raised to power 4 is equal to 16. But it is our demand that we require 12 samples. So we need this 4-bit. Students, what we have studied in our today's lecture, we will conclude that we have determined the method. Students, let's conclude what we have studied today. We have studied how we will convert analog data to the digital signal. For this, we have the method, which is called the pulse code modulation method. The first step of that is sampling of the data, then the quantization of the data, and the encoding of the data. Sampling of the data was done along with the amplitude, that is called the pulse amplitude modulation, and then we have converted the samples analog value into the integral values, and that is called the quantization. And after the quantization, what happened the next? That is encoding, in which we have encoded the data, which is in the form of zeros and ones, and that is actually the conversion of the quantized value into n-bit code. Students, according to Nyquist theorem, the sample rate must be at least 2 times the highest frequency contained in the signal. So if the signal is sampled at regular intervals at a rate higher than twice the highest signal frequency, the sample contains all the information of the original signal. So we have an analog data passed through the pulse code modulation encoder, that is PCM encoder. What is PCM encoder? PCM encoder convert the first done sampling, after sampling quantization, and then the encoding, and the result we have received the digital data in the form of zeros and ones, and then we we will convert, or we have converted the this digital data by passing the line coding scheme, and at the end we have got the digital signal. So we actually what we have done, एनालॉग डाटा को हमने जो है वो डिजिटल डाटा में कन्वर्ट किया थ्रू द पीसीएम एनकोडर, सैम्पलिंग, क्वांटाइजेशन और एनकोडिंग करके। और यहाँ पे जब हमने सैम्पलिंग की और क्वांटाइजिंग की, तो एक्चुअली इसके दरमियान में हमने पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की, और पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन को फिर हमने क्वांटाइजेशन से एनकोडिंग के अंदर पल्स कोड मॉड्यूलेशन से एनकोड किया, और उसके बाद एट द रिजल्ट हमारे पास जो डाटा आया वो जीरो और वंस की फॉर्म में आ गया, दैट इज कॉल्ड अ डिजिटल डाटा। एंड देन उस डिजिटल डाटा को हमने ऑलरेडी जो स्कीम पढ़ चुके थे, दैट इज डिजिटल डाटा टू डिजिटल सिग्नल कन्वर्जन, उसके थ्रू हमने डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट कर दिया। सो फॉर स्टूडेंट्स देखें किस तरह से हमने एनालॉग डाटा को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट किया। हमने वी हैव डन एक्चुअली द फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप हमने वही वाला यूज किया है जो हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर डिजिटल डाटा को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करने के लिए परफॉर्म किया था। So this was all about the today's lecture. I hope you have cleared your concept very well. Thank you very much. Allah Hafiz.